हाँ जी बताइए, कुछ डाउट पूछना है? Sir, I have some doubt. Can I ask? Hello? Hello? जी हाँ जी, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे थे? Sir, I have some very basic doubts. I'm from engineering background. Sir, I have started classes, watching classes, lectures very recently. So, in that one, when there is nothing mentioned about sigma field, we need to assume that G is equal to 2 power omega, that is power set of omega. Suppose it means like P of let's say if capital A is an event, that is a number of 2 power omega, then P of A equal to cardinality summation of all AI for all AI belongs to capital A divided by cardinality of omega. Probability of event A equal to summation EI by cardinality of omega for all AI belongs to capital A. ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों साउंड वैसा थोड़ा आ रहा है कि क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा मुझे पहले तो। Sir, now is it audible? हाँ ऑडिबल तो है, लेकिन आपके आवाज़ के साथ कुछ घड़घड़ाहट भी आ रही है, मतलब वो ना, तो वो क्लियरली आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, साथ में बहुत वो ऐसे नॉइस टाइप का पहुंच रहा है। ये दिक्कत है, तो मे भी पता नहीं क्या, या तो ईयरफोन आप पास ला के कुछ बोलो, या कुछ लिखा हुआ है तो फोटो भेजो, मैं उसको समझ सकता हूँ, लिख के भेजो आप ग्रुप व्हाट्सएप पे। I will reconnect it again. हाँ I will reconnect, sir. हाँ, लिख के भेजो तो समझ आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा। Sir, now am I audible clearly? Is it clear? Is my voice clear now? हाँ वैसे तो वॉइस वॉइस क्लियर है, मतलब साथ में पता नहीं झगड़ाहट इतनी क्यों आ रही है। वो सिर्फ आपके साथ, बाकी बच्चों को क्लियर आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं डिवाइस से कुछ दिक्कत हो सकता है। Sir, what I am saying is, if nothing is mentioned about uh, sigma field, G equal to 2 power omega, sir. यस पावर सेट इज, या टू की Uh, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, यस। P of A, capital A, where A is an event, P of capital A equal to N of A by N of omega. So I'm just thinking how this formula has come, how it differs. Supposing if it differs for supposing if G is explicitly given, then how does P of A comes into picture? P of A equal to probability of all the outcomes where that outcome is present in capital A divided by probability of divided by a total number of outcomes in sample space. That is when G is explicitly given, probability of event डू नो व्हेन दिस इज वैलिड, व्हेन दिस इज वैलिड? A. In the class, it was mentioned that when G is equal to 2 power omega, that is G has to be. You please tell me, sir. You kindly tell me one more time. अरे व्हाट इज हैज टू टेक जी, जी यहाँ पे कहाँ जरूरत है, वेयर इज जी इज रिक्वायर्ड? Okay, G is not there, but I'm just thinking how the G will affect the probability. दिस इज अ क्लासिकल डेफिनेशन, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यू नो व्हेन इट इज ट्रू।
when G is finite अरे and then व्हाट इज every जी व्हाट इज जी से मतलब है या ओमेगा से मतलब है? ओमेगा से मतलब है. देन Okay. क्या ओमेगा क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए और इक्वली लाइकली होने चाहिए। इक्वली लाइकली होना चाहिए. हाँ, और ये जरूरी है होल्ड करेगा, क्योंकि ये तब है जब सैंपल स्पेस में, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब 2 की पावर ओमेगा होगा, है ना? बाकी एलिमेंट अगर नहीं है, सो हाउ विल यू डिसाइड कि कोई लाइकली है कि नहीं है? ओके. सो यू डोंट हैव टू गो विद दिस डेफिनेशन, गलती हो जाएगी, यू गो विद एक्जोमेटिक डेफिनेशन। ठीक है? ओके. हाँ, सर given a PDF, do we have इससे कोई unique? इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओमेगा चेंज हो जाएगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ ओमेगा और से ए बिलोंग्स टू जी, if omega is equally likely, omega is finite set, there is no effect of this, still it will hold, there is no problem. This is where I did not understand, sir. How these two conditions will give rise to P of A equal to N of A by N of omega. अरे भाई मान लो ए में 4 एलिमेंट है, लेट से ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 है। Yes. Yes, sir. तो probability of a means what? Probability of omega 1, probability of omega 2, probability of omega 3, probability of omega 4. Why this is happening? Due to axiomatic definition of probability. Okay. And then if they are equally likely, then 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4. Matlab, for example, it's not 1 by 4, it's a 1 by n. So suppose sample space has n element, I'm taking 4 of them now. So Okay. suppose omega has n outcomes, w1 to wn. So it is like 1 by n, 1 by n, 1 by n, 1 by n. So it is 4 by n. So now this works. If they are Okay. equally likely, then. So here I'm Understood. assuming it is equally likely. So this is 1 out of m, and then it will add to 4. So as many elements in A, it will add up to that. Understood, sir. Thank you. That's all. Sir, our question is, for every PDF, do we have a unique CDF? Every? For every PDF, is the CDF unique? Yes. What do you? Uh, how, sir? So you give one PDF, every from using every PDF, there is one CDF. Yes, you can write only one. How means what? You give me one example, I will give you CDF. That's all. Because, okay. So do you have any example where one PDF is there? There are 2, 3, 4 different 10 CDFs are there. Is there an example? Uh, I'm not able to come up with such example now, You sir. first study basic things, okay? Okay. You are doing some bullshit thing. There is no need of all this, okay? You first study basics and then you need PDF, CDF. These are functions. Functions is unique. Okay. Okay, sir. Thanks.